start education system in British India and before that. So first of all, we'll talk about indigenous education system. For Muslim, there used to be maktabs and madrasas. For Hindus, there used to be tolls and pathsala. All right. Then the higher studies, they used to focus in Arabic and Sanskrit. So those higher institution, they were mainly focusing on Arabic and Sanskrit. And then the in schooling, we used to see that instruction in Persian and in vernacular language. So what is the meaning of vernacular? Local languages. Yeah, exactly. Local languages, mother tongue. All right. Main emphasis. The main emphasis was on classical language in indigenous system. Before Bitsas Bitsas were not involved at that point of time. Uh, After this, Bitsas were involved in education. So classical language, then Sanskrit, classical language like Sanskrit, Arabic or Persian. Then they were focusing on grammar, then logic, law, metaphysics, medicine, etc. So these were the main areas of studies during those days. Thereafter, so the initially East India Company was neutral in educational matter, but there were people orientalists, there were people liberals, there were people utilitarian. All these people actually put a sort of pressure on company, and company started involving in educational matter. So first, chronologically we'll talk Calcutta Madrasa. Calcutta Madrasa. Who established it and when was established? When was it established? तक्षशिमा, बताओगे आप? Who established? Who and when and where? Obviously, where तो Calcutta ही होगा. The Calcutta would be answer. Who and when? सर वैन में थोड़ा कंफ्यूजन है बट वॉरेन हेस्टिंग्स established it. Sir Bentinck, William Bentinck. Warren Hastings. विलियम बेंटिक कब थे? विलियम बेंटिक तो बहुत बाद में थे. विलियम बेंटिक कब थे? 1823 में थे आई थिंक 23 टाइम. ये आपका 1830s के आसपास है। 1835 के आसपास विलियम बेंटिक थे. ठीक है, तो इस टाइम तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एंड बेसिकली फ्रॉम 1774 टू 85 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही वाज, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1781. रिमेंबर दिस थिंग. एक चीज़ ये थी. दूसरा था बनारस संस्कृत कॉलेज. इसको किसने किया था? देखो, if they have to ask in UPSC, they'll ask directly name और मदन year. मोहन मालवीय। नहीं भाई, बनारस संस्कृत कॉलेज. Jonathan Duncan.
Yes. Jonathan Duncan. And when was it established? 1901. The late 18th century. 1791. So 10 साल का डिफरेंस था 1781 and 1791. Now what was the objective? They see, if it's a madrasa, then it's for Muslims, right? And this is Sanskrit college, so mostly for Hindus or those who were studying that point of time Sanskrit, so Brahmins and all. So what was the reason? Have you ever imagined about it? That why did they open madrasa and Sanskrit college? They could have come up with something else also, maybe university, common university for everyone. But why did they open these two particular institutions? The reason was to develop friendly relationship with natives. Natives mean indigenous people. So first, develop friendly relation with natives, that means indigenous people, and then understand the culture. So obviously if you develop friendly relationship with someone, then you'll try to, you'll get to know lot many things. So say for example, is there anyone from Assam? Okay. Anyone from Tamil Nadu? Sabris, I think you are. You are not raising hand. Takshima, where do you come from? Which state? Sir, UP. अच्छा, आप यूपी से हो। और पूजा, आप कहाँ से हो? So I'm from Hyderabad. Oh, you're from Hyderabad. So you're native Hyderabadi or migrated? Migrated, so my grandparents. Okay. So mm, maybe Rukma. Rukma, you're from Tamil Nadu, right? Yes, I'm from Kerala. Oh, you're from Kerala. So let's talk about Takshima and Rukma. It's an imaginative story, but let's assume that Takshima and Rukma they become very good friend. So there are lot many obvious question. Okay, they'll be asking, what do you eat, right? We know that Takshima speaks Hindi and Rukma speaks Malayalam. So this language, we know that what tongue they speak. But apart from tongue, what they speak, the culture, the festivals, the kind of food they eat, the kind of clothes they wear, the kind of tradition and custom they follow. So if these two people are friends, then the friendly conversation will happen and they'll get to know each other. So this is how we know the culture of each other, right? And that's what research tried. They thought that Hindus, they go to mostly, they study mostly Sanskrit, and Muslim, they are involved in Islamic studies and all. So for them there are lot many madrasas. So they opened up again a madrasa in Calcutta. And since Banaras used to be a place for, Hindu, mostly Hindu dominated place, so for Hindus, they opened up Banaras Sanskrit College, and they developed friendly relationship and try to understand the culture. All right. Thereafter, between these two events, there was another Asiatic Society of Bengal. Who came up with this society? Who was the founder? So Asiatic. William Jones. Yes. William Jones was the founder of this society in 1784. So he was the first person who wrote Gita
who translated Gita, I think, into English, and the preface was written by the Warren Hastings. You just need to confirm. I don't remember whether it was Gita or something else, but he translated something to English. इफ़ एनीवन हैज़ एनी आइडिया तो आप लोग एक बार बोल सकते हो, किसी को भी कंफर्म हो इसका कि क्या किया था इसने. बट So Google says it's Charles Viking. एक तो कुछ किया था इसने, विलियम जोन्स ने गीता ट्रांसलेट की या क्या किया, और उसका प्रीफेस लिखा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, इतना मुझे याद है. बट थोड़ा सा आई एम नॉट गेटिंग यू नो एग्जैक्ट. सर Sorry, कालिदास so का is एक प्ले that है शकुंतला, हाँ संस्कृत टू इंग्लिश. फिर उसको किसने लिखा था? गीता गोविंदा. सर गीता को उसने किया था, चार्ल्स. थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो थी, एनी बेसेंट. सर लिखा है चार्ल्स विल्किंस ने किया था गीता को इंग्लिश में. में एक प्रीफेस था जिसको लिखा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है. अब किसका प्रीफेस लिखा था वो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. सर मनुस्मृति, इसने भी मनुस्मृति को भी विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया था. एक बार आप थोड़ा सा चेक करो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस चीज़ का प्रीफेस लिखा था. थोड़ा सा गूगल करके देखो. सर गीता का प्रीफेस वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा है ना. हाँ. और उसको ट्रांसलेट किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने. ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग, ठीक है, कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको प्रीफेस लिखा था. हाँ एग्जैक्टली, चार्ल्स विल्किंस ने लिखा था, भागवत गीता को ट्रांसलेट किया था. सो दिस चार्ल्स विल्किंस वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन who translated Bhagavad Gita, who did English translation of Bhagavad Gita, and Warren Hastings was the first person who wrote the preface. ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है. एंड वॉरेन हेस्टिंग ऑल्सो सपोर्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. इस चीज़ को याद रखना. सो दिस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज established by William Jones in 1784, and main focus was on research on Oriental education. What is the meaning of Oriental education? बताओ आप लोग. ये ओरिएंटलिस्ट हम लोग सुनते हैं. व्हाट इज दिस? व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट? Focus on the Western education, अच्छा, more scientific study. Sir, it focuses on the Eastern education, the culture, lifestyle, everything. कोई और बताओ. ओरिएंटल मीन्स ऑर्थोडॉक्स. कह सकते हो थोड़ा बहुत. सोचो थोड़ा सा. Sir, Asian education. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताओ. वैसे तो ओरिएंटलिस्ट तो उन्हीं को बोलते थे जो एशियन क्लासिकल ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया. एक्चुअली जो ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, they had basic knowledge of language and culture of Asia, and Orientalists were those Britishers who believed in the greatness of Indian culture and opined that Indians should be educated in their native and local language. So they were Orientalist. ठीक है. इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंडियन जो क्लासिकल ट्रेडिशन थी उनको फॉलो करने को कहा था. बाकी आपको एक याद होगा, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी. एनीवन डू यू रिमेंबर?
Orientalist versus Anglistic controversy. Yes, sir. क्या थी वो? Sir, it was basically a debate regarding what kind of education should be provided. For Orientalists, the English, the Indian version, the Indian text, and everything were good. But for Westerners, it was non-scientific and so very Western and scientific education should be given. बेसिकली जो ओरिएंटलिस्ट थे दे सो एक्चुअली डिबेट स्टार्ट हुई कि एक कमेटी बनी थी, ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है. सो इट वाज एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड इन 1823 एंड इसमें 10 मेंबर्स थे. 5 थे इसमें ओरिएंटलिस्ट और 5 थे इसमें जो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे. सो ओरिएंटलिस्ट वर लाइक दैट द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन इंडियन लोकल लैंग्वेज, और जो दूसरे लोग थे वो बोल रहे थे कि इंग्लिश में होना चाहिए. दे वर लाइक दैट नो, इट शुड बी इम्पार्टेड इन इंग्लिश. इसके बीच में उनमें एक कंट्रोवर्सी हुई, जो डिसएग्रीमेंट हुए. सो इट इज़ नोन एज ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी. अब एंग्लिस्टिक इज़ एक वर्ड दे दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ग्रुप थे. इसमें कुछ लेफ्टिस्ट लोग थे, कुछ इवेंजलिस्ट लोग थे, डिफरेंट लोग थे. तो जो एक ग्रुप में आ गए उनको एंग्लिस्टिक बोल दिया एंड द अदर ग्रुप इज़ नोन एज ओरिएंटलिस्ट. तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना. सो आपको मैं क्या बता रहा था कि एशियाटिक सोसाइटी के बारे में मैंने बता दिया. सो बेसिकली इनका फोकस ऑन रिसर्च ऑन ओरिएंटल एजुकेशन एंड कल्चर, एंड द ब्रिटिश सिविलियंस वर टॉट इंडियन लैंग्वेज, लॉज, कस्टम, रिलीजन, ज्योग्राफी. ठीक है, इसके बाद में ओरिएंटलिस्ट का आपको बता दिया. अब लेट्स टॉक अबाउट फोर्ट विलियम कॉलेज. It was established in 1800 in Calcutta. And who established it? Richard Wellesley. Richard Wellesley. Richard Wellesley. And the main reason was to taught British civilian and British civilian officer Indian languages for Sir, your administrative screen is purpose. not visible actually. Oh, just give me a moment. Now is it visible? Yes, sir. ओके, ठीक है. फिर इसके बाद में एक्चुअली देयर वर मिशनरीज ऑल्सो. दे वर क्रिश्चियन मिशनरीज. दे वर कमिंग टू इंडिया एंड देयर वर दिस स्कूल, स्वार्ज स्कूल, 1784. It was established in Tanjore, then Sivaganga, and then London Missionary Society and American Methodist. All these people came to India. Now I want to know what was the name of that act that actually first time recognized state responsibility for the promotion of education. Anyone? What was the name of act? Sir, 1813 वाला. ठीक है, ये 1813 का था. So Charter Act 1813, and the first time state acknowledged the responsibility for the promotion of education, and for the same purpose 1 lakh rupees were assigned for promotion of education in India. Then in 1823, General Committee of Public Instruction. General Committee of Public Instruction. It was देखो बाकी सारी चीज़ें हैंड आउट्स दिया है उसमें आपको ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड इन हैंड आउट्स, बट देर आर सम फैक्चुअल थिंग्स दैट मे बी आस्क्ड इन UPSC. So these things I am discussing. If you want, you can note down also.
So in 1823, it was established General Committee of Public Instruction, and there were 10 members in it. Who was the chairman? बताओगे? Who was the chairman? Lord Macaulay. Who was the chairman? Now tell me. Lord Macaulay. Lord Macaulay. And यही ये जो 10 members committee थी, so they were having this Orientalist and Anglist controversy. Reason, you know, that there's 5 people were in the favor of local languages, the other 5 were in the favor of what? English. Then a regulation of 1835. This was the time from where the promotion of English started. This was the main time, and this was the official regulation. Regulation of 1835, William Vandyck. So court language, earlier court language was the Persian. It was replaced by English. Second thing, that in order to promote English, what they did, that if someone wants to print or publish books in English, it was kind of free, and the book for sale, the book was available at lower price comparatively to books in the other language. Third thing, that more funds were provided to support English. At this point of time, General Committee of Public Instruction were abolished, and it was in 1845, General Committee, that this established in 1823, and it was abolished in 1845. It was replaced by Council of Education. ठीक है, अब एक बार जल्दी फटाफट क्रोनोलॉजी बोलो आप, हमने क्या क्या किया है क्विकली, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ आप लोग, एक एक कुछ भी एक बताना है. सो आई विल स्टार्ट विद आकांक्षा. सब आकांक्षा कुछ भी एक बताओ आप. सर एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट करना है ना? हाँ, एजुकेशन में ही स्टार्ट करना है, तो आप हाँ. बताओ. For indigenous systems में Muslims had the maktabs and madrasas and Hindus had tours and pathshalas, and for higher studies Arabic, Sanskrit and Persian and local languages vernaculars were used. ठीक है. फिर जो कैलकाटा मदरसा था वो कब ओपन हुआ था? 1781 by Warren Hastings. वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है. इसके बाद का इवेंट प्राज्वल आप बताओ. Athletic Society of Calcutta was established in 1784. William Jones. William Jones. Rukma, third event. पूजा आप बताओ. So Sanskrit College was established by Jonathan Duncan in 1791. Next event. Vikas. Sir, Fort William College, that 1800 by Richard Wellesley.
Fifth event, Sangeeta. Sir, Charter Act of 1813 for education. Hmm. State responsibility for the promotion of education, 1 lakh rupees assigned. Next event, 1823 General Committee of Public public instruction, 1823, headed by Lord Macaulay. seventh event, रेगुलेशन ऑफ 1835. क्या हुआ था इसमें रेगुलेशन ऑफ 1835 में? हु ब्रॉट इट? So William Bentinck. विलियम बेंटिक. क्या हुआ था इसमें? So use of English language in Supreme Court. Promotion of English started. Not in Supreme Court language but changed court from language. Persian to English. Persian to English. And then pre-printing and publication of English books, more funds to support English. ठीक है? Then next event बताओ, इसके बाद का बड़ा event क्या था? The next big event. Abolish General Committee. Abolition of General Committee of Public Instruction. कब हुई थी? 1845. 1845. किसने रिप्लेस किया इसको? Replaced by Council of Education. Council of Education. ठीक है? The next event is Wood's Dispatch, जो थोड़ा सा बड़ा, बाकी और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें करवा दूंगा, जैसे कि Michael Madhusudan Datta was offered membership of Asian Society of Paris. Asian Society of Paris was established in 1822. Then Dada Bhai Nauroji was the first. Note, if you want, you can note down these things. Dada Bhai Nauroji was the first Indian Asian to be a British member of Parliament. He was MP in House of Commons from Liberal Party, 1892 to 1895. Then एक फैक्ट और है, सर विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास शकुंतला इनटू इंग्लिश. Warren Hastings wrote the preface to the English translation of Bhagavad Gita done by Charles Wilkins. He was the first Englishman to translate Bhagavad Gita into English. ठीक है? Sir, he also translated Fatwa Alamgiri. हाँ, एक चीज़ और लिख लो आप.
एक मिनट. Fatwa Alamgiri. What was it about? Sir, it was the laws for the Muslims. ठीक है. सो ये चीज़ें याद रखना आप कि चार्ल्स विल्किंस ऑल्सो ट्रांसलेटेड फतवा आलमगिरी एंड ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश. Sir, this is about Warren Hastings. Fatwa Alamgiri. अच्छा, फतवा आलमगिरी की वॉरेन हेस्टिंग्स की बोल रहे हो? Yes, sir. And sir, one more thing. This was व्हाट ही डिड? he translated Fatwa Alamgiri into English, and also Code of Gentoo Law. कोड ऑफ व्हाट? Gentoo Law. GENTOO. GEN TOO. TOO. ओके, जेन2 लॉ. आप इसको बोल रहे हो ना? उस तरह आपकी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा. हाँ, अब आया सर. ये ना, यही बोल रहे हो ना? यस सर. यस सर. ठीक है, ठीक इसे है. इकट्ठे है Gentoo मतलब. अच्छा, ठीक है, ठीक है. सो ये चीज़ें याद रखना थोड़ा सा. जैसे आप लोग भी अगर कुछ मिले तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट. आई मीन देयर मे बी थिंग्स विच आई मे मिस. तो कुछ होगा तो आपकी साइड से भी आएगा. सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. ठीक है. हाँ, अब आपको बुट्स डिस्पैच के बारे में बता देता हूँ. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री, and it gave the shape to education policy. So basically, Charles Wood was the president, and it was established on 19th July 1854. So there were lot many recommendations by Woods. We'll talk about few. First one, creation of Department of Public Instruction in each province of company. जो कंपनी के पास आई थिंक 5 प्रोविंस थे उस टाइम में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 1854. तो उन पांचों प्रोविंस में इसने बोला था कि यू हैव टू दैट द कंपनी हैज़ टू क्रिएट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज creation of department of public instruction in each province of company. सेकेंड इसकी रिकमेंडेशन थी, इसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी. सो आई जस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, Calcutta and Madras, and these were established in 1857. आपको कोई पूछे कि जो हाई कोर्ट थे, ठीक है, वो हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे, तो उसको आप याद रखना. कब हुए थे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड? So 1860 के अराउंड. हाँ, वो तो मुझे पता है. आप एग्जैक्टली बताओ. 1861, 1862? So 61. 61, 62 था टाइम. यही कैलकटा में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, और मद्रास में हुआ था. एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज दी फोर्थ आई थिंक इन 1865. ठीक है. सो खैर, इसका कुछ लेना देना नहीं है. आपको सिर्फ ऐसी फैक्ट बताया है मैंने. दूसरी चीज़ क्या थी? सेकंड थी कि इसने कहा था कि एक ग्रेडेड स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट. ग्रेडेड स्कूल, इट मीन्स हाई स्कूल, मिडिल स्कूल and elementary school. That's what he suggested. Then he said that teacher training institutions should be established. Teacher training institution should be established. He said promotion
of vernacular schools. अभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर स्कूल. सो याद रखना ये बुट्स डिस्पैच में आया था दैट इंडियन नेटिव्स ट्रेनिंग इन मदर टंग, जो ट्रेनिंग स्कूल में भी जो ट्रेनिंग हो इट शुड बी डन इन मदर टंग. देन ही सेड द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट women education. Then he said introduction of system of grant in aid for financial help to the schools, private school and public school. इसके बारे में देवर ही सजेस्टेड. सो दो तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं. एक वर्नाकुलर कूलर के बारे में पूछा जा सकता है. देन ही कैन ऑल्सो आस्क अबाउट दिस ग्रांट इन एड सिस्टम किसने स्टार्ट किया था. सो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखना. एंड ही ऑल्सो सेड दैट एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. सो ये बुट्स जो थे उनकी रिकमेंडेशन थी 1854 में. इसके बाद एक मेजर इवेंट था हंटर कमीशन. हंटर कमीशन केम इन 1882. It is known as first Indian education commission, W. Hunter. It was constituted by Lord Ripon in 1882, and the main purpose was to set up this commission was to review the educational development after 1854. 1854 में बुट्स डिस्पैच आया. उसके बाद ही गेव सम सजेशन. उसके बाद एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ इसके लिए हंटर कमीशन आया है. इट इज़ नोन एज फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑल्सो. लॉर्ड रिपन सेटअप दिस कमीशन. The recommendation were primary education development. He also said primary education development. Then he said vocational training in secondary education. This can be asked कि vocational training के बारे में किसने बात की थी. And in fact if we are writing मेंस में अगर हम लोग लिखें तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं. vocational training का मतलब क्या होता है बताओगे आप लोग? So skills development. Exactly. अब एक चीज़ अंग्रेज़ों ने कब रिकमेंड की थी 1882 में, है ना. और हम स्किल इंडिया अभी लेके आए हैं थोड़े साल पहले, 4-5-6 साल पहले, है ना. सो आप अगर चाहो तो इसको स्किल इंडिया जो है हमारी स्कीम है इसको इससे अलाइन कर सकते हो. मतलब आप समझ रहे हो कि बिटसर्स उस समय कितने आगे देखते थे. मतलब उनकी फोरसाइट कितनी हाई थी कि वो ये समझ लेते थे कि इस टाइप की स्किल डेवलप होनी चाहिए ताकि लोग दे कैन गेट दी जॉब. तो सेकेंडरी एजुकेशन में ही सेड दैट देयर शुड बी वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन. Then he also said that he also said that there are inadequate facilities for women. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट था वो था नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1906 on 15th August 1906. Then Sadler Commission. 1917. Basically, it was established to study the problem of Calcutta University. There were 2 Indian members and headed by Sadler. 2 members were Asutosh Mukherjee and Ziauddin Ahmad. So this commission made a recommendation that improve secondary education if you want to improve university education.
Second, he criticized, and there was this University Act in 1904. So he criticized this act. He said that there is no proper coordination between college and university. So that's what he also said. ठीक है. अब एक इससे पहले एक यूनिवर्सिटी कमीशन था, इससे जस्ट पहले यूनिवर्सिटी कमीशन. It was set up by Lord Curzon, 1902. Thomas Raleigh was the chair of this commission, University Commission. Basically, it was established for educational reform, and Indian members were Sayyid Hussain Bilgrani and Justice Gurudas Banerjee. And based on the recommendation of University Commission, University Act 1904 passed. And this Sadler Commission criticized it. ठीक है. अभी मैं बताऊंगा कल. आई कैन आस्क रैंडमली, आपको क्रोनोलॉजी से पूरा बताना पड़ेगा एक लाइन से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, हर चीज़ आपको बतानी पड़ेगी. एंड सेटलर कमीशन के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑल्दो इट रिकमेंडेड मेड द रिकमेंडेशन फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, but these recommendation and remarks were more or less applicable to other Indian universities also. यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में आपको बता दिया है. लॉर्ड मैकाले के बारे में आई वांट टू टेल यू. So basically William Bentinck appointed a committee headed by Lord Macaulay to make recommendation for the promotion of education in India. So what Macaulay said, Macaulay was critic to Indian educational system. He said that Indian educational system lacks secular values, it lacks scientific values. So all these remarks he made, and basically these were not remarks but insult of existing educational system at that point of time. So Macaulay emphasized that the promotion of European literature and science through English medium to the people of India. Second, that these recommendations wholeheartedly accepted by the William Bentinck in 7th March on 7th March 1835, and that's the reason we saw a regulation of 1835 by William Bentinck. The government resolution in 1835 made English as the official and literary language in India. अभी आपसे पूछ ले कि कब English official language बनी India में. So 1835 is the option. And this resolution opened a new chapter in the history of Indian education. It was from that time the Western education began to spread in India rapidly. The foundation of modern educational system in India was laid down by the Macaulay Minute in 1835. His comment on Sanskrit or Arabic by saying that a single shelf of good European library was worth the whole literature of India and Arabia. That's what he said. Then he suggested making English language of higher education in India with Western language as the subject of study. Then he said that the public mind of India might expand under the English system, and through the English language it may educate the people into a capacity for better government. So there is this filtration theory. Who gave this filtration theory? Downward filtration theory. क्या थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? बताओ. Sir, downward filtration theory was it was an attempt to educate a very small section of upper class and middle class Indians
would be Indian by birth, but Western and English in their thought and and they will further educate the other people, the masses. So basically, education would filter down from elite to the masses. ठीक है. सो ये मैकॉले मिनट मैंने आपको बता ही दिया है. इसके बाद एक डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इन 1884 formed by Lokman Bal Gangadhar Tilak and Gopal Ganesh Agarkar with BK Chipa. I don't know his. I'm not getting his name. Some BK Chiplumkar. I think something like this. And Mahadev Ballal as the other members. Then Hindu College in Calcutta was established in 1817 by David Hare and Alexander Duff. It was supported by Raja Ram Mohan Roy also. Delhi College was established in 1824. ये इवेंट आप इंक्लूड कर लेना ताकि कल जब आपको बताना हो तो आप एकदम पूरी क्रोनोलॉजी से बताओ एक लाइन से. So Delhi College in 1824. Then there was this Lord Mayo College, in Ajmer in 1875. Then Muslim Anglo Oriental in Aligarh in 1875. Fort William College, I have already told you, on 10th July 1800 by Richard Belsley. बस यही था. एजुकेशन में तो इतना ही है. बाकी चीज़ों के साथ थोड़ा सा ऐड करके आप लोगों को और बताऊंगा मैं. इतना ही था मेरी साइड से आज के लिए. सो कल याद रखना, आप ऑल ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है. एक क्रोनोलॉजी बनानी है. एंड मैं स्टार्ट तभी करूँगा जब आप ये मुझे बता दोगे. ठीक है. सो कल जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का लेफ्ट आउट जो है, वी विल डिस्कस दैट.